तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा रथ घर तिरंगा घरो घरी तिरंगा प्रत्येक घरी तिरंगा आसमान को पाना है आसमान से आगे जाना है नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है गर्व है इस तिरंगे पर सारे जहां को ये दिखाएंगे अमृत काल मनाएंगे घर घर तिरंगा लहराएंगे घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा तिंका झंडा मने मने गु त्रिवर्णा इलमिंदु वन्नतुरी तिरगडोरा हर घर तिरंगा इंडिया 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 केसरिया रंग है क्या ये रंग मेरी शक्ति का है ये रंग मेरी ताकत का है ये रंग देश के माथे पे सजा श्वेत है क्या रंग सत्य का ये श्वेत रंग शांति का है ये श्वेत रंग एके का है ये रंग देश के दिल में है बसा रंग हरा तो खुशहाली का है ये धर्म चक्र विकास का उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा शाम घोरे तिरंगा खेत खेत तिरंगा रोटी घोरे पताका घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा Yeah, come in. Everything's good. Also, have you finished reading that week? That you took? Yeah, it's upstairs, so take it. Can I take it? Thank you. घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा रथ घर
त्रिवर्णा केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा। तिरंगा प्यारा घोड़े घोड़े तिरंगा, शाम घोड़े तिरंगा, घेर घेर तिरंगा, धोती घोड़े पताका। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर Take your take. तिरंगा, भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिंका झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। हर घर तिरंगा, इंडिया 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 इंडिया।
रंग है क्या, ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या, रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा। तिरंगा प्यारा, घोरे घोरे तिरंगा, शौक घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, गोली घोरे पताका, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिंका झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। हर घर तिरंगा, इंडिया 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 इंडिया।
मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शाम घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, तुम्ही घोरे पताका, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। उसके बाद हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। नमस्कार।
आज के स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नितिन मधुसूदन नागरकर, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं आईआईटी भिलाई की शासी परिषद के अध्यक्ष सम्माननीय श्री कृष्ण मूर्ति वेंकट रमणन, हमारे संस्थान के संस्थापक निदेशक आदरणीय प्रोफेसर रजत मूना, मंच का अस्तित्व हमसे हम भले नेपथ्य में है, संस्थान के प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर नेपथ्य से हम सबकी मार्गदर्शिका श्रीमती रजनी मूना, आईआईटी भिलाई के कुल सचिव विंग कमांडर सेवानिवृत्त डॉक्टर जयेश चंद्र एस पै, आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक वशिष्ठ कला विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर सोनल झा और यहाँ उपस्थित आईआईटी भिलाई के छात्रगण, संकाय सदस्य, कर्मचारी वृंद एवं अन्य सभी उपस्थित सम्माननीय जन। एक घटना दो पदचारियों की है। दोनों समवेत चल रहे थे। अचानक पर्वत शिखर के बिंदु पर आ पहुंचते हैं और दोनों के पैर अयाचित रुक जाते हैं। पहला, मार्ग अवरुद्ध है, बाधक तत्वों से बचना श्रेयस्कर है, मैं वापस लौट रहा हूं। दूसरा, हाँ, मार्ग अवरुद्ध है, वापस लौटना पराजय है, आगे जाने के परिणाम संपुट नहीं है, पर यही तो विवेक का महाद्वार है। व्यक्ति के नाते कांच का चूर्ण बनना दोनों स्थितियों में संभव है। एक स्थिति होगी पराजय और आत्मग्लानि तथा गलत मार्ग के चयन से, दूसरी स्थिति में पश्चाताप का संवेग घृणा और ग्लानि से बचा लेगा। वह वापस नहीं लौटता, अवरोधी पर्वत के शिलालेख पढ़ता है, पता लगता है यहाँ तो अनंत संदेश लिखे हैं, व्यतीत ज्वलंत हो उठता है, यानी व्यतीत के शिलालेख वर्तमान की चुनौती में ढल जाते हैं, वह संतुलित हो जाता है, उसकी गिद्ध दृष्टि सतर्क होकर अभीष्ट मार्ग पर केंद्रित हो जाती है। बस यही एक निर्णय का क्षण है। इसी क्षण में निर्माण और विध्वंस दोनों समायोजन है। यही क्षण निर्णायक है, नियंता है। इसी क्षण में इतिहास के पृष्ठ पलटते हैं। सन 2016 में ऐसे ही किसी क्षण में, जो अब इतिहास है लेकिन तत्कालीन वर्तमान था, निर्माण की प्रक्रिया संकल्पित हुई और एक संस्थान की स्थापना की परिकल्पना की गई और उसकी नींव रखी गई, जिसका नाम था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई। आज हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है कि हमारे संस्थान की स्थापना के उपलब्धिपूर्ण 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हम कई संघर्षयुक्त अविस्मरणीय सफलताओं के साथ, बाधक तत्वों का सामना करते हुए मजबूत संकल्पों के साथ, हिम्मत कम कर देने वाली किंतु शिक्षाप्रद चुनौतियों के साथ, पुरानी परंपरा और मूल्यों को मस्तिष्क में रखते हुए नवीनतम तकनीक और अद्यतन ज्ञान के साथ, और आईआईटी भिलाई के बढ़ते हुए परिवार के एक अनुभवी, सफल, सुदृढ़, बहुआयामी और कुशल नेतृत्व में अपने 7वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसी 7वें स्थापना दिवस के आयोजन में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 स्वर, 7 समुद्र पौराणिक मान्यता के अनुसार, 7 ग्रह, आकाश गंगा के सप्तर्षि, सूरज के रथ में 7 घोड़े, 7 सद्गुण, 7 दुर्गुण, 7 परिक्रमा, पृथ्वी के ऊपर और नीचे 7 लोक, 7 महाद्वीप, गीता के 700 श्लोक, 7 देव नदी, विवाह में अग्नि के 7 फेरे, भारत के 7 शास्त्रीय नृत्य, 7 अंक की महत्ता के लिए इतने ही दृष्टांत पर्याप्त हैं। हर दृष्टांत हमें एक अलग संदेश देता है, जिसका समेकित रूप ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति चरैवेति। जो मनुष्य बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी रुका रहता है, जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उसी प्रकार उठता है, जो पड़ा या लेटा रहता है उसका सौभाग्य भी सो जाता है, जो विचरण में लगता है उसका सौभाग्य भी चलने लगता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। ऐसे संस्कृत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित अवसर पर हमारे बीच 3 सर्वाधिक प्रासंगिक व्यक्तित्व उपस्थित हैं। हमारे संस्थान के संस्थापक निदेशक आदरणीय प्रोफेसर रजत मूना, जिन्होंने अपने अथिक परिश्रम से इस संस्थान की नींव को मजबूत बनाया है और अल्पतम समय में संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मजबूती के साथ स्थापित किया है।
विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री कृष्णमूर्ति वेंकट रमणन, जो अपने अनुभव से किसी भी संस्थान को शिखर पर स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, और मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नितिन मधुसूदन नागरकर, जो एक ऐसे संगठन के संस्थापक निदेशक हैं जिसने केवल अपने एक दशक के इतिहास में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और देश के, खासकर इस प्रदेश के चिकित्सा संबंधी समस्याओं के निराकरण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अतः मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करें। अस्तो मां सद्गमय, असत से सत की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर चलें। इन 3 लघु वाक्यों में बृहदारण्यक उपनिषद का शाश्वत संदेश है, जो मानव मात्र के लिए सत्य का संप्रेषण करता है और अज्ञान के अंधकार का नाश करके ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करता है। ज्ञान चर्चा के इस शुभ आंगन में मूलतः 2 पक्ष उपस्थित हैं, शिखर पर पहुंचे हुए गुरु और अल्पायु जिज्ञासु एवं दृढ़ निश्चयी शिष्य। गुरु का अर्थ है अंधकार को नष्ट करने वाला। इसका अर्थ एक श्रेष्ठ भी होता है। गुरु और शिष्य दोनों के आत्यंतिक और आश्चर्यमय मिलन में घटती है एक अद्भुत घटना और खिलता है आत्मज्ञान का आत्मकमल। गुरु का दिया शिष्य के दिए को प्रज्वलित करता है। जिस प्रकार गुरु प्रदत्त शिक्षा जड़ता को नष्ट करती है, उसी प्रकार दीपक अंधकार को नष्ट करता है। अंधकार हमेशा अज्ञान का प्रतीक माना जाता है और ज्ञान के आंगन में अंधकार का क्या प्रयोजन। इसलिए मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नितिन मधुसूदन नागरकर सर से आग्रह करता हूं कि वे दीप को आलोकित करते हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर। मैं विशिष्ट अतिथि माननीय श्री कृष्णमूर्ति वेंकट रमणन से भी आग्रह करता हूं कि वे आभासी रूप से दीप जलाने का कष्ट करें और डॉक्टर सोनल झा उनकी ओर से यथार्थ रूप से मंच पर दीप प्रज्वलित करें। अब हमारे परम आदरणीय निदेशक महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे कृपया दीप प्रज्वलित करते हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध है डॉक्टर जयेश चंद्र इस पर कृपया दीप प्रज्वलित करें और मंच पर आकर अपने स्थान पर विराजमान हों। अंत में मैं दीपक की आखिरी बाती प्रज्वलित करने के लिए आज के कार्यक्रम के समन्वय डॉक्टर सोनल झा से आग्रह करता हूं और साथ ही में कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। मां सरस्वती वहीं ठहरती हैं जहां खुले हुए मस्तिष्क के वातायन
की तरह उड़ान भर सकें और उसे व्यंजनों अभिव्यंजनों से अभिभूत करने की अपेक्षा उसके मस्तिष्क का अभिषेक करें। पूजन से और पवित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह सभी ध्यानों, परिधानों, उपासनाओं, विपासनाओं, आराधनाओं, साधना और सम्यक विजय का सहज पात्र है। पूजा का क्षण विजय का महाशंखनाद है। आइए हम उन स्वरों को आत्मसात कर लें। विद्या के प्रांगण में विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की वंदना हेतु मैं आमंत्रित करता हूं श्री अंश आजाद, पीयूष पैकरा, रोहित अश्वनी, गरिमा टाटा और एति दांडेकर की टीम को। हेलो हेलो हेलो। धन्यवाद। मानव जीवन यज्ञमय है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, जहां निज स्वार्थ, लिप्सा और तृष्णा की बलि दी जाती है। उपनिषद में 5 महायज्ञ कहे गए हैं। भूत यज्ञ अर्थात प्राणी मात्र से आत्मवत प्रेम और करुणापूर्वक व्यवहार, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। अतिथि यज्ञ की महिमा यहाँ तक है कि मनुस्मृति में अतिथि को भगवान कहा गया है, सर्वदेव मयो अतिथि। और यह कहा गया है कि विद्या तपः समृद्धेषु हुतम विप्र मुखाग्निषु निस्तारयति दुर्गाच्च परतस चैव किल्विषात्। अर्थात विद्या और तप से संपन्न अतिथि का सत्कार हमें समस्त पापों से छुटकारा दिलाता है। सभ्यता ने सिखाया है कि आगंतुक देवता होते हैं और देवता उसी के द्वार पर पहुंचते हैं जो योग्य हो। तो हम अपनी योग्यता का केवल इतना प्रमाण दे सकते हैं कि हम अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करें। मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि वो मुख्य अतिथि का एक सौभाग्य वृक्ष से स्वागत करें और सिमी हजारिका उसे लेकर कृपया मंच पर आए। अब मैं अपनी टीम से आग्रह करता हूं कि वे आभासी रूप से विशिष्ट अतिथि महोदय
माननीय श्री कृष्णमूर्ति वेंकट रमनन के कर कमलों में अपने आदर पुष्प प्रेषित करने की व्यवस्था करें। अब रोशन से मेरा आग्रह है कि वो निदेशक महोदय का सौभाग्य वृक्ष से स्वागत करें। मैं एक बार पुनः सिमी हजारिका से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर जयेश चंद्र एसपै का सौभाग्य वृक्ष से स्वागत करें। एक बार और रोशन को कष्ट देता हूं कि वो सोनल झा का सौभाग्य वृक्ष से स्वागत करें। और अंत में मैं सिमी हजारिका से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती रजनी मुना का सौभाग्य वृक्ष से स्वागत करें। आप सबको मेरा धन्यवाद। एक प्रतीक चिन्ह अर्थात लोगों की तरह किसी संस्थान का गान उसकी पहचान की अभिव्यक्ति है और वह उस संस्थान विशेष के इतिहास और परंपराओं का या तो समग्र वर्णन है या पाक्षिक गुणगान है। श्रीमती रजनी मुना के मार्गदर्शन में अंशु चक्रवर्ती के निर्देशन में गोविंद कुमार अरोड़ा द्वारा लिखित डॉक्टर सुस्मिता बसु मजुमदार, प्रसेनजीत डे, अरिजीत सेन और सुदेशना गोस्वामी के स्वर से सज्जित एवं कई अन्य व्यक्तियों की लगन, रुचि और अथक प्रयासों के बाद आईआईटी भिलाई ने अपना एक गान तैयार किया है जिसका लोकार्पण पिछले स्थापना दिवस पर किया गया था। आईआईटी भिलाई के गान को प्रस्तुत करने के लिए मैं पुनः छात्र गायन मंडली को आमंत्रित करता हूं, जिसमें शामिल हैं यश टेकचंदानी, अंश आजाद, अनंत त्रिपाठी, पीयूष पैकरा, शोभन, आस्था रंगारे, जी हासिता, रोशनी कौशिक और लक्ष्मी रेखा। मेरा वैयक्तिक विनम्र आग्रह है आप सबसे कि गान के सम्मान में थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। चलो। सबके दिलों पर राज करेंगे, जो नामुमकिन वो आज करेंगे। सबके दिलों पर राज करेंगे, जो नामुमकिन वो आज करेंगे। हम ऐसा एक आगाज करेंगे, दुनिया वाले नाज करेंगे। हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई। आंधी के आगे झुकना नहीं है, आसमां पे रुकना नहीं है। आसमां से आगे जो है, अंतरिक्ष भी होगा अपना। यहाँ कोई
हमने अपना किसी से बैर नहीं, अपना लो परिवार यही, यारों का दरबार यही। से अलग कहलाना है, ऐसा व्यक्तित्व बनाना है। हाथ उठाकर वो आसमां पे हमको एक ही नाम लिखाना है, हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई। ये आवाजें कुछ बोल रही हैं, उम्मीदों को तोड़ रही है, कुछ कर जाने की आशाओं में ये हर दरवाजा खोल रही है। सोचा है वो कर गुजरेंगे, खाना है जो के ही लेंगे, क्या रोकेगा हमको जमाना, लक्ष्य है मंजिल को पाना। सबके दिलों पर राज करेंगे, जो नामुमकिन वो आज करेंगे। हम ऐसा एक आगाज करेंगे, ये दुनिया वाले नाज करेंगे। हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई, हम हैं IIT भिलाई। तालियां एक बार और बजनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इतने आदर्श के करीब थे। जो ओरिजिनल ट्रैक था इसका, उसके इतने करीब थे कि मेरे रोंगटे अभी तक खड़े हैं। किसी को यदि प्रत्यक्ष करना हो तो वो देख सकता है। आखिर मुश्किलें मार्ग दिखाती हैं मुझे, आफतें बढ़ना सिखाती हैं मुझे, पथ की उत्तुंग दुर्दम घाटियां ध्येय गिरी चढ़ना सिखाती हैं मुझे। ये पंक्तियां आज यहाँ जिस व्यक्तित्व की ओर इंगित करती हैं, उनका नाम है प्रोफेसर रजत मूना, जिन्होंने इस संस्थान को स्थापित किया, पहचान दिलाई और काबिल बनाया। मेरे हिसाब से संस्थापक का यह फुल फॉर्म है, संस्थान की स्थापना, पहचान दिलाना और काबिल बनाना। इनकी लगन और मेहनत का परिणाम है कि हम संभवतः इस वर्ष के अंत में अपने अस्थायी परिसर में स्थानांतरित होने की आशा करते हैं। तो 7 दिन में रचित इस ब्रह्मांड के 7 लोग भू भुवः स्वः महः जनः तपः और में से एक, 7 महाद्वीपों और 7 समुद्र वाले इस सप्तद्वीपा पृथ्वी के जम्बू द्वीप के एक खंड में स्थित, सूरज के 7 घोड़ों की गति से उन्नति पथ पर अग्रसर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आत्मा के 7 उपहार, विवेक प्रज्ञा उपदेश अनुसंधान ज्ञान भक्ति और शक्ति के अपने 7 इंद्रधनुषी रंग बिखेरते हुए 7 अगस्त 2016 को स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के 7वें स्थापना दिवस समारोह पर सप्ताह के 7वें दिन अपने स्वागत भाषण के साथ मैं हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना को आमंत्रित करता हूं। I think people has kind of stretched जोश in the today's function. वो 7 की परिभाषा इतनी सुंदर दी है कि एक बार ताली बजाने का मन करता है। थैंक यू विपुल।
Professor and Dr. Nitin Nagarkar, the chief guest of the Foundation Day function today, and the director of AIMS Raipur. Shri Krishnamurthy Venkatramanan, Chairman Board of Governors of IIT Bhilai, and also ex-Chief Executive Officer and Managing Director of L&T. Dr. Jayesh Pai, Wing Commander, Registrar, IIT Bhilai. Dr. Sonal Jha, the convener of the program today and faculty member in the Department of Creative Arts at IIT Bhilai. Faculty members of AIMS Raipur, faculty members, members of staff, students of IIT Bhilai, ladies and gentlemen. Good afternoon to you, and let me extend my warm welcome to all of you. Today, when we have all congregated to celebrate the honor and the achievements of the Institute on its 7th Foundation Day, I feel prudent to look back and see our journey in time. I, along with several others, have been the witness of this remarkable journey right from the beginning. When our institute started on this day 6 years back, we had several constraints. We have had tremendous growth since then, and every member of our fledgling community has shown the energy and resolve to innovate, challenge, and create in all spheres of our collective life as an institute. From academics to research, from sports to arts, from incubation to execution, our students, faculty members, and staff members have demonstrated a resolve of never tiring ourselves in our efforts. The result is in front of all of us. Our alumni, though small in size, are crafting names for themselves and for the institute, whether in industry or in higher education or in government or pursuing their own business goals. We are really proud of them and their achievements. From just a few hundred students in 2016, today the institute boasts of about to cross a strength of 900 students and research scholars in as many as 19 programs. Growth of our students has also been the growth in every way of ours. With a record exceeding 90% placement, we feel a sense of satisfaction and gratitude for a job done very well. The institute today is proud of many enhanced lab setups, state-of-art equipment, and increased facility that we did a few years back. We recently have expanded the capacity for the girls students, expanded the boys hostel capacity by increasing the residential space for the students outside of the campus. We have started new academic programs such as BTech, MTech, and PhD in data science and artificial intelligence, which were received by incoming students with great enthusiasm. Data science and artificial intelligence is one of our flagship programs. This academic session onward, even more exciting programs in the fields of electric vehicle technology and mechatronics have started functioning in the institute. Designed to equip our students to meet the dynamic demand of Industry 4.0, these programs will mark IIT Bhilai as a pioneer in responsive and innovative education. Our new batch of BTech students is expected to arrive in the campus in a few months from now, and it shall also include those budding engineers who are seeking their career in mechatronics, which is being offered the first time in IIT Bhilai. The dedication and rigor displayed by our faculty in grooming our graduates to achieve those aims have been exemplary. Despite the onerous impact
of the COVID-19 pandemic last few years on our everyday life and emotional and mental well-being of faculty has continued to take obstacles in their stride and march forward in pursuit of excellence. This is evident in the laurels which they have secured in recognition of their scholarly merits and contributions. Professor Santosh Vishwas, Head Department of EECS, received the 2022 Qualcomm Faculty Award in acknowledgement of the groundbreaking research undertaken by him in the domain of VLSI testing. Dr. Anandita Ghosh of the Department of Liberal Arts was conferred the Alumni Excellence Award 2021 by IIT Hyderabad, her alma mater. Dr. Jose Emmanuel and Dr. Udairaj of the Department of Mechanical Engineering were appointed as Outstanding Young Faculty Chair and Buddhiraja Family Young Faculty Chair, respectively. Dr. Suchetan Paul of the Department of Chemistry was recently appointed as Outstanding Young Faculty Chair, sponsored by GSTN. These and many other accomplishments have raised the profile of the institute, auguring a brighter and better future. The institute is getting tremendous support from various well-wishers. Several donors have come up to support our students and recognize their talent through various scholarships and award programs. These include P.K. Jain Memorial Award, Geet Amal Ghosh Rai Award, R.P. Singh Memorial Award for Leadership and Social Work, Gayatri Devi Leadership Award, GSTN CSR Scholarship for MSc students, KP Jain Higher Education Award, and Alumni Association Young Researcher Award for students. In keeping with the national pursuit of developing a startup ecosystem, the institute created a very welcoming policy of supporting startups by faculty, students, alumni, and others. With a 55 crore grant from Department of Science and Technology, Government of India for Technology Incubation Hub, the institute has been able to support several startups in the financial technology or so-called fintech area. For this purpose, institute also formed IIT Bhilai Innovation and Technology Foundation, a Section 8 company of IIT Bhilai. We also received CSR grants from HDFC Bank and GSTN to support startups. Our faculty and students have been actively exploring investment avenues and platforms across the startup ecosystem to contribute to the strengthening of our national technological economy. Dr. Arjad Alam Kherani of the Department of EECS co-founded Eggverse Technologies Private Limited, which aims to augment the fertility and productivity of dairy farm cows. Dr. Suchetan Paul of the Department of Chemistry, along with few other faculty members, founded Microneedsilin Patch, a health tech startup that will make insulin delivery and blood glucose monitoring easy and accessible to all. Dr. Jose Emmanuel R. of the Department of Mechanical Engineering formed a tech startup, Linus Renew Tech, for developing technologies to convert saline water to drinkable one. In less than a year, close to a dozen of our students have come forward to utilize the exciting new opportunities opened up by IIT Bhilai and IBITF. Dr. Gagan Raj Gupta of Department of ECS, along with 3 students, created a startup for developing technologies for hospitals and ophthalmologists for identifying diseases like cataract, diabetic, retinopathy, glaucoma, etc. We recently signed an agreement with AIIMS Raipur for collaborating in development of many such health initiatives and taking it all the way to translational part of the research. As we talk today, there is a first joint meeting planned between IIT Bhilai faculty members and the faculty members of AIIMS Raipur
And I'm extremely hopeful that some very fruitful outcomes will come out which will benefit the country at large out of this. I can go on listing several technologies which our students and faculty members have developed, but due to paucity of time, would like to mention that several such high-tech startups are being set up in the future. To that extent, about 20 students have been awarded fellowship by IBITF to work in diverse areas of fintech and with an aim in consonance with the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System, NMICPS. The commitment to digitization, transparency, and efficiency, which have characterized our institutional working so far, continues to be upheld. We became pioneers in the higher education ecosystem by launching digitally verifiable degrees in our very first convocation, which also continued to the second convocation and shall be the norm for all future degrees. The students are given USB sticks carrying the PDF files of their degree, and that is the real degree that they carry all along. Not only this, but we also took a big leap towards becoming a paperless office by wholeheartedly implementing a software, a system called e-Office, which is the Government of India's flagship digital workplace platform developed by National Informatics Center. By adopting the e-file module, we have shown our resolve and concern toward the environment and sustainability and have fully replaced the manual handling of files with a more efficient electronic system involving diarization of inward correspondences, creation of files, movement of correspondences and files, electronic signing of files, notings, and drafts using digital signatures, and archiving of records. It has replaced the paper files to a large extent, which, as many of you would know, is a major bottleneck in modern offices today. The adoption of e-Office at this early stage in our institutional journey will make us a future-ready institute where governance and management will be at par with international best practices and will provide an enabling, conducive environment for responsive research and innovation for faculty and students alike. My address to you will not be complete without commending all our members of our staff for tirelessly contributing to our holistic growth. A special mention must be made to our health center staff and the staff at our hostels who, under the guidance of various faculty members and wardens, have competently steered our student body through the COVID-19 pandemic and made it possible for in-person classes to resume fully in the institute as early as a year back. Vaccines were administered to all eligible students who gave their consent for the same. Management of medical waste and provisioning of food and medicines were undertaken with care and caution by the hostel staff. The staff members of all our other units, namely administration, Dean of Academic Affairs, Dean of Student Affairs, Dean of Faculty Affairs, Information Technology and Information Services Center, they all helped the institute sail through tough times of pandemic by managing the education and other facilities through online mechanisms. In conclusion, allow me to leave you with a promising note for the future. More than 3/4 of all work for the first stage of our permanent campus has been completed. The project has received awards like Occupational Health and Safety Award by British Safety Council, the Graha Award for Exemplary Performance in Site Management and Construction Workers, Health and Safety, and the NCSI Safety Award for Outstanding Performance in Occupational Safety and Health by the National Safety Council. These were the awards which we received in last year. These are in addition to the exemplary awards that we received from Graha Council last year in the areas of passive architecture, integrated water management, and energy management. I'm confident
that IIT Bhilai campus is going to be an exemplary campus for many such campuses to follow. As I talk to you, I'm also very happy to let you know that our permanent campus construction project is also awarded Graha LD 5-star master plan rating. This award was announced a few weeks back, coinciding with the World Environmental Day. This has boosted our confidence in getting a campus that will be truly exemplary among all similar campuses and a role model not only in India, but also elsewhere in the world. The credit of our recognition goes to the effort put in by entire campus, permanent campus construction team, internal staff members of the state office, our advisors and various committees, faculty and staff members, external consultants, CPWD, third-party quality auditors, and construction contractors. With the aim of zero discharge and optimum utilization of renewable energy resources, our permanent campus is already setting new benchmarks for sustainable and responsive construction and resource management. I can go on listing our achievement, but more than this, we will be seeking for doing the great work in the time that lies ahead of us. Our activities are being illustrated in various ways today. With this, I come to the end and assure everybody that the Institute is poised for a great growth in the time to come and shall become one of the landmarks of modern India. Thank you very much. धन्यवाद सर। नेतृत्व कुशल हो तो उपलब्धियां और पुरस्कार पीछे पीछे आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपने कुशल नेतृत्व के सम्मान में एक बार और आप ताली बजाएं। पद चिन्ह उनके बनते हैं जो रागों को विराम देने का सामर्थ्य रखते हैं। पद चिन्ह उनके बनते हैं जो अजगर को मात्र एक रस्सी समझकर भुजाओं में बांध लेने की क्षमता रखते हैं। पुरुष की पहचान धरती से होती है, धरती नहीं है जिसके नीचे वहां पौरुष नहीं है। और हमारे शासी परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री कृष्णमूर्ति वेंकट रमनन एक ऐसी ही शख्सियत हैं कि जिनकी उपलब्धियां आकाश को छूती हैं, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं। और इन्हीं के लिए शायद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री वेंकट रमनन भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं कि ये जिस जिस पथ पर जहां जहां चले हैं वहां वहां अपनी अमिट छाप अंकित करते हुए आए हैं। मैं उनके एक पुस्तक तुल्य परिचय को चंद पंक्तियों में समेटने का अदम्य साहस प्रस्तुत कर रहा हूं। और यह भी बता दूं कि जितनी बार भी मैंने इस साहस को करने की चेष्टा की है, चीजें भले ही वही रही हों, पर मजमून हर बार नया सा लगता है। आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग एवं निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम हैं। आपने इंजीनियरिंग एवं निर्माण जगत में L&T के सशक्त प्रयासों का कुशल नेतृत्व किया है। ईपीसी वैल्यू चेन के सभी क्षेत्रों को मजबूत किया और वैश्विक ईपीसी बिरादरी में L&T को एक प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में कायांतरित कर दिया। रक्षा उपकरण निर्माण, तेल एवं गैस प्लेटफॉर्म और पावर प्लांट के क्षेत्रों में नए व्यापार को जन्म देने का श्रेय आपको जाता है। आप और कोई नहीं बल्कि हमारे संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष हैं श्री कृष्णमूर्ति वेंकट रमनन। आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से 1962-66 के दौरान केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। सन 2005 में आप उस संस्थान के डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। आप इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क इंस्टीट्यूट INC USA के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई हैं जिनके 2 वर्ष का कार्यकाल मई 2010 में पूर्ण हुआ। आप इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स UK के मानद फेलो भी हैं और केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्था से यह उपलब्धि पाने वाले दूसरे भारतीय हैं।
आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स के फेलो भी रहे हैं। एलएनटी के निदेशक मंडल में आप 1999 में शामिल हुए और उसके प्रेसिडेंट के तौर पर 2001 में पदोन्नत हुए। 2012 में एलएनटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई। सेंटर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोकार्बन एलएनटी चियोडा एंड पावर सेक्टर्स एलएनटी एस&एल की स्थापना में आपकी अग्रणी भूमिका रही है। इस कंपनी में आपका कुल कार्यकाल 16 वर्ष 6 माह का रहा है। चेयरमैन मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, चेयरमैन कैपिटल गुड्स स्किल्स काउंसिल फिक्की, चेयरमैन नेशनल नॉलेज फंक्शनल हब फिक्की, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी कानपुर के रूप में आपने अपनी स्वैच्छिक सेवाएं भी प्रदान की हैं। कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान आपको पाकर गौरवान्वित हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं डेविडसन फ्रेम अवार्ड वाज कन्फर्ड बाय हिम बाय IPMA स्विट्जरलैंड फॉर स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड for the year 2002. IPMA level A assessor in December 2008. He is the second Indian to receive this title. Honorary doctorate in project management by University of Petroleum and Energy Studies UPES Dehradun in May 2011. Association of Business Communicator of India, India's largest such body of professional communicators. The Global Business Communicator Award in November 2011. VV Mariwala visiting professor in chemical engineering confirmed by UICT Mumbai. Association of Food Scientists and Technology, Fellow of Indian National Institute of Chemical Engineers, Fellow of Indian National Academy of Engineers, GPIMA Golden Peacock Innovation Management Award for Knowledge Management and Creativity, Golden Peacock National Quality Award for Achievement in the Total Quality, ICMA Award for Pioneering Work in Development of a Novel Heat Recovery System for Cement Industry, and the last one, the Lala Sriram Award for Leadership in Chemical Industry. आपकी अभिरुचि के क्षेत्र है नेतृत्व का विकास, कंपनी नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन, कौशल विकास और प्रशिक्षण। आप एक जिज्ञासु पाठक, देश विदेश में व्यापक रूप से भ्रमणोत्सुक एवं एक सक्रिय खिलाड़ी हैं। टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ में आपकी जबरदस्त अभिरुचि है। निश्चय ही हमारे संस्थान के लिए गौरव की बात है कि आप हमारे शासी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो मैं बीच से हटता हूं और माइक आपको सौंपता हूं सर, प्लीज। बहुत शुक्रिया विपुल, आपने तो बहुत ज्यादा ही कह दिया, तो थैंक यू वेरी मच। डियर ऑनरेबल चीफ गेस्ट टुडे, प्रोफेसर डॉक्टर नितिन मधुसूदन नागरकर, our Director IIT Bhilai, Dr. Rajat Boona, our Registrar, Wing Commander Jayesh Pai, the organizer for today's program, Madam Dr. Sonal Jha, faculty and members from IIT Bhilai and AIMS Raipur, faculty, students, families, distinguished guests. It's really a great honor to be here today with such auspicious occasion of the 7th Foundation Day. Just as when I joined IIT Delhi in the 60s, AIMS Delhi also was quite a new institution. And I remember fondly, they were in house cars and we were closer to Barauli, and that was our nearest academic place where we could have some interaction and social activities and sports. And I'm very happy that this association has now started between IIT Bhilai and AIMS Raipur. There's a lot that can be integrated between a lot of research data, the transcriptions that are given for very tough diseases like cancer and maybe other diseases. And on the other side, data analytics and machine learning from the engineering students. Many years ago, when I was at the National Academy of Advanced Studies in Bangalore, when there was a conference of SARC scientists, where I was to give a talk also, there was a fantastic study of an American Institute of Cancer Research, and on the other side, an equivalent engineering institute like ours here, and how
they had analyzed the type of treatment that was being given for various types of cancer patients and the type of dosages and the type of medicine that were prescribed, and also to analyze on what type of patients and what type of dosages and medicines the recovery was better than the others, more to understand exactly how to improve the dosage and also control the cost. So I'm really very happy that we have such a class, world class institutes next to each other. I hope it really gives a lot of cross functional learning for our people in our own institute. So, welcome to the 7th Foundation Day celebration. Foundation Day is a time to reflect on achievements of the past, which Professor Rajat Munna has very nicely brought out, and also in our ambitions and challenges for the future. Coincidentally, we saw that beautiful rhyme or anthem of Tiranga because India is also celebrating 75 years of Indian independence on August the 15th. And we have for India also, as it comes out in that the nai, soch and the nai progress that we will make as a country. Bhilai is very much an emerging city at the heart of India's industrial revolution and renaissance after independence. Our first Prime Minister, Sri Jawaharlal Nehru, had coined the terminology temples of modern India to creations such as Bhilai Steel Plant, Bakaranangal Dam, and our IITs, the first generation IITs, were also the temples of modern India in terms of education. IIT Bhilai is going to be a place with this lineage and a place where knowledge and innovation find their heart and cultures. Using the same terminology, the first 5 generation IITs, IIT Kharagpur, IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kanpur, and IIT Delhi, were also the temples of modern India in engineering and technology, and established themselves as an international brand of repute and distinction. And the second and third generation IITs are further growing out of this revolutionary spirit. We'll be proud to be sharing this heritage and continue with an ambitious and challenging vision and plan. Today, IIT Bhilai will take on targets that continue to take into account the past in the higher education sector and across society, and also bring in and recognize likely future challenges. Our vision is of IIT Bhilai growing rapidly our external research and contract income, markedly improve student satisfaction, enhance collaboration with industry, attract world-leading scholars, and significantly increase the number of students from less privileged backgrounds. Continued ambition is essential for our future success. But with finite resources, we must focus on our strengths if we are to be great rather than a good engineering school. We need to clearly establish what is truly distinctive about our research, our teaching, our graduates, our influence, and our impact. International recognition and engagement is an increasingly important measure of our success. Our popularity with international students in the years to come will be one reflection of our growing global reputation, creating a truly international campus. Further, the faculty and students of IIT Bhilai will interact and work with schools across the region and widen the impact for ordinary people across all backgrounds. I'm very happy that in our campus planning, we have adopted a school which is adjoining our own campus, a simple municipal school, and I hope we can really transform it and transform the lives of so many people who study in the school from very simple backgrounds. These activities will impact on many
of our closest neighbors, which represent some of the least advantaged communities in the country. Hence, IIT Bhilai will aim to be a major contributor to the social and economic growth and to the physical transportation of Bhilai and its neighborhood. I'm very happy to see through the newsletters the role played by all of you, the faculty, and also Mrs. Rajat Muna in this area, because it's going to be very important that we not only produce world-class students, but we also produce students with values and improve the neighborhood. Our modern campus will be ready to occupy in a few months, as our director had mentioned. IIT Bhilai will have to be much more than a stunning campus. We are also committed to being people-oriented organization, supporting our staff and providing an outstanding experience for our students. We will deliver a new approach to the student experience, offering our students an integrated scheme that allows them to take advantage of a range of programs outside their own degrees. I think Professor Rajguna has talked about the new areas like electrical vehicle technology, data science, because I think the old song is there, Chodo Kal ki baatein purani. So we are in that stage of inflection point where we have to have the foundation of the past, but we need to have the programs of the future. Activities such as international study, social responsibility projects, training in leadership and entrepreneurship, volunteering, and internships will enable our students to experience real world challenges as soon as they join us. I have learned from my own experience the importance that helps you in later life when you, in your student days, do a certain amount of volunteering and social activities, apart from, of course, your studies and your interest in sports and other areas. We believe that we have the ingredients and the faculty and leadership to make the student experience at IIT Bhilai truly distinctive and transformative. In my interactions with you all, and also with a number of PhD students, during my online understanding of what they are doing, and with many of the professors, you have a very high-powered, enthusiastic Yuva group here. I think you must realize your own potential and really take. All of us generally don't work for our full potential, because we restrict ourselves to what may have happened in the past in other places where we may have studied. But in the new institute, your progress can be infinite, because you have hardly any bureaucracy. You have a good new equipment. You have an enthusiastic bunch of younger students who are coming in. So I really want each one of you who are so well qualified and who are so enthusiastic to focus your research and your teaching on generating something where you use a large part of your potential. World-class research is fundamental to IIT Bhilai and its main driver of our international reputation. In the next decade, it's important to maintain a far-reaching vision that is understood and shared with our supporters and more widely. And today, India is transforming in the areas of the latest developments in the new technology areas of green engineering and in use of electrical vehicle technology, reducing fossil fuel, improving the environment. I think there's tremendous potential if you know how to focus our research and efforts on exactly how you can contribute to this change on a continuing basis. We must be clear and focused about what we are doing, where we excel, and what our challenges are. Our students, our faculty, our research, and our impact on society are the keys to our future. On our history of success and on our vision, but which also looks forward with ambition, will be our goal.
This is IIT Bhilai. Here we break convention, we forge revolution, we make a difference. Go ahead and achieve it. And thank you very much. धन्यवाद श्रीमान। वर्तमान में भारत की आज़ादी के 75 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के तत्वावधान में भारत सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत देश के नागरिकों को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर एक हर घर तिरंगा गान भी प्रमोचित किया गया है और भी भारत सरकार ने बहुत सारे इसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं चाहता हूं कि IITIS की टीम उसमें से एक गान को कुछ क्षण के लिए प्रदर्शित करें। तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, एक घर तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। धन्यवाद। मूलतः यह हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त के दौरान मनाया जाना है और इसमें IIT भिलाई की तरफ से हमारी एक पहल है कि हम तिरंगा और उसके साथ उस ध्वज जो भी है हम दे रहे हैं। आप में से जो भी चाहते हैं कि आप तिरंगा फहराएं अपने अपने घरों पर, IIT भिलाई से वो ले सकते हैं और यहाँ के प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। युगों से संघर्ष की चेतना रही है और उसी से मनुष्य विकसित हुआ है। मनुष्य जीवन निरंतर संघर्ष करता है कि उसके समस्त शारीरिक अवयव सम्यक रूप से कार्यरत रहें। संघर्ष और क्रियाशीलता मनुष्य को अनगिनत अनुभव प्रदान करते हैं। अनुभव वह ज्ञान है जो प्रयोग या परीक्षा द्वारा प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति की किसी अन्य विधा से ज्यादा उत्कृष्ट होता है। अनुभव उम्र से नहीं आता बल्कि परिस्थितियां हमें अनुभवी बनाती हैं। अनुभवी लोगों के अनुभव नई पीढ़ियों के लिए या ज्ञान वृद्धों के लिए पथ प्रदर्शक बनते हैं। आज हमारे बीच कुछ ऐसे ही सहकर्मी हैं जो अपने अनुभव आपसे साझा करने की लालसा रखते हैं। अब मैं उन्हें एक एक कर मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम छात्र की ओर से श्री शाश्वत जायसवाल। प्रोफेसर नागरकर, श्री वेंकटरमन जी, प्रोफेसर मूना,
Dr. Pai, Rajni ma'am, everyone present here, members of the board, faculty members, and fellow students. I'm honored to speak with you on this very important day. I still remember the first time I stepped into this foyer. I was 18. Neither did I know anything about this place, nor did it know much about me. It feels strange, right? How a place could be so competitive, yet so homely, so professional, yet so welcoming, so new, yet so congenial. It's been a long time, 6 long years since these walls have been the hearth to this vehement fire. 6 long years and counting of building this place from ground up to touch newer heights each day. 6 long years of realization that it's going to be a long and tough road. But at the same time, 6 long years of ensuing efforts in a million different domains, not only technical excellence, but also cultural brilliance. Not to mention umpteen sleepless nights by everybody within these walls to bring this place where it stands today. It's been a really long time. For us, IIT Bhilai is not just a sojourn meant merely to facilitate a phase of our lives. It's been much more than that. It's been like a really huge family where we live, grow up, and learn together with the invaluable support of our elders and seniors. And today, I want to give a big congratulations to everybody for being here today. We have lived past COVID 19 and through the thick and thin of the time. And here we are, looking back on these 6 sparkling years despite all odds. So let's give us a thunder of claps and round of applause. It's been a long time. And thanks to what IIT Bhilai has made us, I'm confident that it will keep climbing as if we are on an endless ladder to heights we have never achieved before. Not just technical excellence, but also polished and a class apart in terms of culture, elegance, personality, and ethics. At the end of the day, it's producing not just engineers and scientists, but also members of the society and citizens of the country. But 6 years is a really long time. And this has simply been a place of beauty for creativity and learning. And it would be wrong to not commend the efforts and vision of our dearest Professor Muna, Rajni ma'am, the invaluable guidance of Dr. Pai, the support and mentorship of our dear members of the faculty, members of the board, the most hardworking members of the staff who uphold the foundations of the academic machinery. And lastly, the housekeeping, security, and support staff, without which this celebration would be incomplete. This is our day, and we should proudly celebrate what we have become today. And yes, it has been a long time, and it's also a very long way to go. Not a challenge, but a responsibility for us to keep chasing horizons, keeping the banner aloft in the academic circles of the world. A young institute comes with its own set of challenges and responsibilities to fulfill on everybody's part, but it also presents a clean slate to sketch your own story. And I am proud that IIT Bhilai actually has done that. Now, at this moment, as a member of this huge family, we have an opportunity. Indeed, this is our time to, to take on the world and to find and pursue our passion. To quote unquote, leave a legacy behind. Thank you. That's it. थैंक यू शाश्वत. हाँ. 1 मिनट. हेलो. रुक जाओ भैया. अब कर्मचारी की तरफ से मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती नीलिमा गौतमी को.
Good evening, everyone. Today, I am here before you to share my experience at IIT Bhilai. My first day here started with interaction with my colleagues by visiting their departments. When I visited mechanical lab, which is in the basement, you all know, I think so, there I saw something in Hindi. I'm a South Indian and an expert in Hindi, quite opposite to people, sir. So it is written something in Hindi. I hardly could read only 3 words. Nichala, Nichal. And as per my Hindi knowledge, there is no word in Hindi called Nichal. So I went to mechanical lab and the person there introduced himself as, hello ma'am, I am Nichal. And I just read Nichal. Okay, so both the words are same for me. I asked him, why have you written your name on the walls of the institute? He said, where? I shown him. He said, ma'am, it is Nichala Bhutal. As you are coming from ground floor to basement, it is direction towards the basement. That is my first day here started in the year 2016. My experience here is 1 year younger than the IIT Bhilai. I mean, IIT Bhilai is of 7 years, and I traveled a journey of 6 years all the way at IIT Bhilai. I was here when there was no faculty of its own and operating with only 10 project staff. Now we have 62 faculty members and 47 staff members. I feel the unanimous growth during these years in all the aspects is because of an equal contribution of all our faculty members, staff members, as well as students. One more thing I would like to add, without institution, there is no management. But without management, there is no institution. The credit of such management goes to our director, sir, Professor Rajat Muna, without whom the shaping of such organization would not be possible. Since the day I joined this institute, the one thing I can always count on is the continuous support of my colleagues. You people showed me patience, guided, and motivated me whenever the situation arose. Today, before leaving the stage, I would like to thank our director, sir, Rajni ma'am, and entire IIT Bhilai family for supporting me wholeheartedly. Thank you. थैंक यू नीलिमा। हिंदी में नहीं बोलता हूँ, नहीं तो उसका मतलब कुछ और निकाल लोगे तुम। अब मैं संकाय सदस्य की तरफ से प्रोफेसर संतोष विश्वास को आमंत्रित करता हूँ। Good afternoon to one and all. So I would like to share my experience in setting up of the Technology Innovation Hub. Already we have heard Director Sir saying about the achievements that have been done by our TIH, but I would like to share how it was established. So it started towards the end of December 2019. The Government of India, DST, said that they have got a very ambitious project of 3,000 plus crore, and 25 institutes across the country will be given Technology Innovations Hub in cyber physical systems. And of course, you can understand that coming to the top 25 institutes of the country was a great challenge at that time. So when the advertisement came, our faculty members from EECS made Director Sir that what should be our stand. And they had a lot of restrictions that there would be so many faculty members, space to be competing for that. Then we thought that it was a hub and a spoke model. So we can collaborate with some senior IITs and see that if you can be their spoke. But somehow, I mean, due to some kind of, I mean, we are trying to find out commonly mutually agreeable areas, I mean, sharing of funds. So it could not be materialized. So we could not collaborate with any of the first year IITs and who were already pitching for this project. But after that, in just about the pandemic start of pandemic in March 2020, the second level of advertisement came that everybody, I mean, even if you do not have space or you are growing IITs or startup institutes can also compete. Then again, we made our director sir that what should be our stand. And then we took a very strong stand that this time we will be this hub and let people join us. So we'll put full efforts and show that as a new institute, we can also bid for it. And then pandemic started, and even it was a full virtual mode, working with all the ECS faculty members. And at that time, we had directors are also as a colleague, as a ECS faculty member rather than a director. So together we worked mostly in virtual mode and we wrote our proposal. And then we got an email when just the lockdown was coming to an end that we have been shortlisted for the second round of presentation. And we were about 120, 25 odd institutes were within the top 40.
So again, we started preparing for our presentation with the help of all faculty members of the department, director, sir, we started preparing, and then we should go for the presentation. And among these 40, some 11 or 12 institutes would come into the top 25. So then we had a lot of hard work, practice, rehearsals. And interesting part at that time, the lockdown was over, but still if you have the Arogya Setu showing red or yellow, we cannot come to the institute to present. So there was a lot of dilemma that who would come and who will be there to the presentation and all. But fortunately that day, when most of the core members, including director, sir, we were there for the presentation. But again, I mean, as you know that all these presentations get delayed, and generally it is to be presented by the chairman of the proposal, which is the director of the institute. So I remember sir had a meeting and there was a saying that he may have to leave, otherwise somebody else from the department has to present. But fortunately we got our turn and we made the presentation. But again, anyway, our presentation was done. We hoped for the best. And in fact, I had a bet with few faculty members that we may not be getting it. The competition was very fierce. And finally, after 1.5 months, call came to director sir that we have been selected. We have been in the top 25 institutes who is getting the project. And then our journey started. And we were very proud that there only three 3G IITs made into that, and many of the 2G IITs could not make into it. So, and also whatever budget we quoted were granted to us, saying that their proposal was very soundly made and we could get it. Then our journey started, and many of the faculty members even did not know what the Section 8 company, because we have all our experience in papers, publications. So again, we had to contact director sir that how it should be formed, what is the Section 8 company and all. And we got some ideas and started working. But then we have to take up a CA to do it. And what happened is that, I mean, we were totally believing on the CA. And at that time, we knew that did not know that if there is a certain mistake, if you are making in uploading your documents to the MCA portal, it gets locked for 25 days. And our deadline was approaching from DST that within January, some date on 2020, if you're not opening the company, funds may be delayed. Then I still remember director sir told us and a few members of faculty who were engaged in making up the company, do you think that the CA is more intelligent you people are? Why you people are not reading to and understanding? Then we took this load for the first time that even we can also be opening startups, understanding company laws. And with his guidance, we started dictating the CA that you please do it in that way. And happily, I would say that we were one of the first few TIHs in the second round who opened up the Section 8 companies. And even some 2G IITs called me and saying that, please send us the documents, how do you open up this company? So we helped any 2G IITs, even one first G IIT and several other institutes in opening up this Section 8 company. Then we started writing our DPRs and so forth. And then our journey started. And then we are fortunate to recruit one of the very senior CEOs, Dr. B.K. Murthy, who has spent a long time in MIT and joined us. And now we have already heard what the director has said, that we are in a very good position among all the 25 hubs. And the recently presentation in IIT Chennai about our status, we are within the top 10 TIHs. So we are all much ahead than the third generation IITs and even quite ahead of many of the second generation IITs. So now we have also got around 8 to 10 crores extra funding on top of DST in our TIH. So with everybody's blessing and help, we are doing well, and we expect that this thing works. So again, thank Director Sir, Madam, and all the ECS faculty members and other faculty members in our journey for the TIs. Thank you. थैंक यू सर। मैं ITIS की टीम से फिर से आग्रह करूंगा कि कोई दूसरा वीडियो उसमें चला दें। अपने शांत हो जाएगा थोड़ी देर में, तब तक आप वीडियो चला। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी
तिरंगा हर घर तिरंगा तिंका झंडा मने मने गु त्रिवर्णा வண்ணத்தொழி இருளதோறும் हर घर तिरंगा इंडिया इंडिया केसरिया रंग है क्या ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा शाम घोरे तिरंगा घेर घेर तिरंगा गोली घोरे पताका घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। धन्यवाद। मन में तप और मस्तिष्क में संकल्प। तप शून्य को अर्थ देता है और संकल्प हमारी अगाध शक्ति का ज्योतिपुंज है। संकल्प तपस्या का प्रतिफल है और तपस्या उद्भूत परिणामों को आज तक कोई हिला नहीं सका। जो संकल्पित होकर तपस्यारत रहकर यथाशक्ति अपना कर्म करते रहते हैं, समाज और समय निस्संदेह उन्हें पुरस्कृत करता है। इस संस्थान में भी श्रेणी बी व सी समूह के जिन कर्मचारियों ने अपनी तपस्या को आस्था और विश्वास के हाथों में देकर मनोयोग से विगत वर्षों में निरंतर अपना कार्य किया है, उनकी तपस्या के प्रतिफल का समय आज आ गया है। अपने दैनंदिन कार्य के अलावा कुछ अलग महत्वपूर्ण प्रशंसनीय कार्यों का संपादन करने वाले एवं सांस्थानिक स्तर पर उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को संस्थान प्रतिवर्ष पुरस्कृत करता आया है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा के लिए मैं संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर जयेश चंद्र एस पै को आमंत्रित करता हूं। I apologize for the tremendous heat and humidity today. I hope Mr. Anurag will give us the AC room next year for the foundation day. He's sitting here, so he'll realize our difficulties. Anuragji, we depend on you. I know today has been a surprising day. I've never seen Sonalja without a mask, and Santosh Bishwas also. And for the first time, I saw him without a mask today. Sonal, I don't know when you will give us that surprise. A lot of surprises today. Before I announce the award, the Best Employee Award, I want to share two stories with you, very short stories. When I saw that bonfire going on, I remembered a similar day, exactly 25 years back. It was the 50th Independence Day. Shankar Dayal Sharma was about to hand over the presidency.
I think July is the time when the presidency is handed over. So just before he handed over, he had come for the passing out parade of one of our colleges. And we had a lot of people awarded with, awards. Like I was one of the recipients of the Best Teachers Award. So Shankar Dayal Sharma, I mean, he was a great teacher. He ensured that he brings his cooks along with him in the aircraft, and he cooked such a delicious 19 course meal for all the people who got the awards in Bangalore. Something similar to what you get in Rashtrapati Bhavan. And all of us had such a marvelous dinner that day, sitting in the hall with the President of India. And he said, look, these awards won't motivate you. What will motivate you is the dinner which you got. So next time you tell everybody, say that there is a presidential dinner awaiting for the award winners. In fact, now the award winning is shifted to the Rashtrapati Bhavan, and you get, I believe, 23 course meal. So some students here who are going to get some awards from the president, please remember a fabulous meal awaits you. And that is the motivation. And the second thing which I would like to bring out is there are so many employees with us, so don't think that, why only 3 people have been awarded or why only so many have been awarded. Each one has contributed to the growth of this college. You heard 3 stories. There are several more which you can hear. There will be some of you who have done immense contribution in the background, may not be in the awards, but you will be certainly remembered in the memory. When the history of IIT Bhilai is written, there will be some people who are remembered always. Someone like, say, Dr. Rishi, who's sitting here, it'll always be remembered for the history of IIT Bhilai. So let's begin the awards. I would like to invite the chief guest today and Dr. Rajat Muna to give away the awards. And with the permission of the chairman, BOG, and Dr. P.D. Srivastava, who's not here, I would like to start naming. So the first Best Employee Award goes to Nischal Tamrakar. He's Junior Superintendent Mechanical Engineering. He has done exceptional contribution to the development of signages in the campus, mess furnitures, 3D CAD models for visual appearance and customizations related to the main campus, in addition to his core duties. So the second award winner is Muhammad Arif Khan, Junior Technical Superintendent, EECS, for his exceptional contributing to power-related planning for the permanent campus and implementing indigenous alternative to the costly third-party alternative for auto cutoff of ACs. He also has patents, by the way. The third award winner is Kumar Waldekar. He's assistant in Department of DOFA for his exceptional contribution in conducting various events in the institute, in addition to his core activities. So thank you, sir. Thank you. And I thank all of you who have come here today to attend the foundation. Thank you.
मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार तालियां उनके लिए जिनका नामांकन आया था लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। यदि वे नहीं होते तो इन्हें भी पुरस्कार नहीं मिलता, क्योंकि कोई प्रतियोगिता ही नहीं होती थी। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी विजेताओं से। कोई भी नवस्थापित संस्थान जब विकास के पथ पर अग्रसर होता है और जब समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लगता है, तब अपना सामाजिक योगदान देने लगता है, तो सूचनाएं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों से संचारित होने लगती हैं। यही सूचनाएं संस्थान को समाचार की विभिन्न विधाओं के माध्यम से संस्थान के कार्यों को जन जन में प्रसारित करती हैं। हमारे संस्थान ने भी विगत वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और उपलब्धियां हासिल की हैं, फलतः सुर्खियों में भी रहा है। संस्थान का मीडिया प्रभाग प्रतिवर्ष उन सभी सुर्खियों का संकलन करता है जो स्थानीय समाचार पत्रों में हमारे संस्थान की उपलब्धियों अथवा सामाजिक योगदानों के रूप में प्रकाशित होते हैं। मेरा आग्रह है कि वे इन संकलन को लेकर कृपया मंच पर आएं और मुख्य अतिथि महोदय एवं निदेशक महोदय से मेरा निवेदन है कि हमारे संस्थान के उल्लेखनीय कार्यों के संकलन IIT भिलाई न्यूज का विमोचन करें। धन्यवाद श्रीमान। एक दिन नदी किनारे एक व्यक्ति मिला। वह दुनिया से तटस्थ था, या तो छला गया था, या विपत्ति से संत्रस्त था, या मृग तृष्णा में भटक रहा था। एकदम निरापद अकेला देखकर मैंने पूछा, दिन श्यामल हो चला है, तुम क्या करोगे यहाँ? पहले वह मौन रहा। दूसरी बार जब मैंने पूछा तो हताश होकर उसने उत्तर दिया, करने न करने को अब रहा ही क्या है, अपना भार ढो रहा हूं, बस यही शेष है। वह भटक गया था, असामान्य होने की प्रक्रिया में अपनी समस्त भावनाओं को तिलांजलि दे चुका था। मैंने कहा, पानी के किनारे बैठने वाला जीवन भर प्यासा रहता है, तुम पानी में उतरो, मेरे साथ उतरो। बिना कुछ कहे मशीन की तरह वह मेरे साथ पानी में उतर गया। मैं मुस्काया, मैंने उसे आश्वस्त किया, यही तुम्हारे जीवन का नया मार्ग है। इस संक्षिप्त सी कहानी में मैं या मैंने, यह सर्वनाम आज जिस पर सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होता है, वह है हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर नितिन मधुसूदन नागरकर, जिनके बारे में कहा जाए कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए, नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। डॉक्टर नितिन मधुसूदन नागरकर का जन्म 27 नवंबर 1963 को हुआ। पटना विश्वविद्यालय से आपने सन 1987 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। PGIMER चंडीगढ़ से सन 1992 में MS ENT और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस नई दिल्ली से 1993 में DNB ENT की उपाधि प्राप्त की। MS की पढ़ाई के दौरान ही आपने PGIMER चंडीगढ़ जनवरी 1990 से नवंबर 1994 तक जूनियर एवं सीनियर रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात मई 1996 तक आपने LTM मेडिकल कॉलेज मुंबई में लेक्चरर के पद पर कार्य किया। जून 1996 से अगस्त 2012 तक आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल चंडीगढ़ में सीनियर लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। दिनांक 6 अगस्त 2012 से आप एम्स रायपुर के संस्थापक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड बाय दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन 2006 और टाइम्स ऑफ इंडिया आइकन ऑफ हेल्थ अवार्ड 2016 एंड 17
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपने 44 राष्ट्रीय और 11 अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग कोर्सेज एवं कॉन्फ्रेंसेज में हिस्सा लिया है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके 52 शोध प्रकाशित हैं और आपने 4 विविध पुस्तकों में अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में अलग अलग अध्याय भी प्रकाशित किए हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, एसोसिएशन ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया AOI, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज NAMS, इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी IMSA, मेंबर ऑफ फाउंडेशन ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी इंडिया के आजीवन सदस्य हैं। आप 2013 से 2015 तक इग्नू के एकेडमिक काउंसिल के भी सदस्य रह चुके हैं। जिनके नाम का आद्याक्षर अर्थात नितिन सही रास्ते का शिक्षक, सिद्धांत या न्यायाधीश का पर्याय हो, जिनके नाम का मध्य भाग भगवान कृष्ण का द्योतक हो, फिर मुझ जैसा अकिंचन कुछ और बोले तो अनर्गल प्रलाप होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर नितिन मधुसूदन नागरकर को। पहले तो विपुल जी को धन्यवाद दे दूं, इतना उत्कृष्ट मंच संचालन उन्होंने किया है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। My special thanks to Professor Rajat Mona, my very dear friend, Director of IIT Bhilai, for calling us over here, for me as the chief guest and my team from AIMS Raipur. Thank you very much, sir. I'm very honored to have as guest of honor over here the very, very senior and knowledgeable, the persons who are galaxies of IITs. I mean, I'm very impressed by the guest of honor and the kind of, you see, it's really amazing. From Larsen and Toubro, where he started his journey, what he is today, I think he's a stalwart. I mean, what he stands for, what IITs have been producing. Both of you, the director of IIT Bhilai, our guest of honor here today, really, Venkatramanan sir, they are what you people should be aiming for. I think this is what the government had aimed for when these IITs or these IIMs were instituted, that we'll have these glittering products who are going to show the future for the students here today. So thank you very much, sir, to both of you for the wonderful work that you've been doing as the director, and he is the chairman of the Board of Governors. I know that he's online and from London and from UK, he's joining us. So thank you very much. My special thanks to Dr. Pai, Dr. Sonal Jha, who have been conducting this wonderful program. Madam Rajni, who has been, I know, the heart and soul of IIT Bhilai and how it has developed, faculty members from various departments, our own faculty members from AIMS Raipur, the staff who've done exceptionally well, all those who got the awards today, and all those who put in exceptional efforts to bring IIT Bhilai to this level, and of course, my dear students. So thank you very much for inviting me for your Foundation Day. IIT is a product, is a kind of value that all of us know very well. IITians have done exceptionally well in our own country and abroad, whether they are doing as startups, whether as faculty members, industrialists, entrepreneurs. Plus, there have been in other acts of life also, activities of life, walks of life, whether they became politicians, whether they became, in arts and literature, so different kinds of activities. But I think what differentiates an IIT product compared to any other product is the quality. The maintenance of quality, that high quality and an assurance towards nation building. So you come through a very tough selection process, whether it is the students who get selected to the IITs. I know the tough selection which goes on for faculty members and the staff who have to come to these IITs, and the kind of work that is done here. It's of the highest nature. In fact, you are the ones who show the path to the other institutions, the other technological institutions. And I think on a similar nature, we also have the like you have the Act of Parliament and the IITs in 1961. We have the AIMS Act, which came in 1956. And then subsequently, we have all these new AIMS here coming up. The same thing is true for IITs also. I think then you had the first generation, second generation, and then of course the new generations coming up. But all of them will stand for the same quality which the original IIT has stood for. And again, as I said, institutions are not just the brick and mortar building. It is basically the core faculty, how exceptionally well they do.
the students and researchers, the quality of work that they come out with, and that is something which is most important. And across the globe, IIT as a brand value has been built up over decades. I think it's a great honor for us to have IIT in our own locality over here. I think Chhattisgarh is lucky and Raipur is lucky that you have institutions like IIT, AIMS, NIT, HNLU, and other national institutions also coming up over here. You have got MOUs with different institutions, including some very important national institutions, and I think foreign institutions like Taiwan and others, BSP, CDAC, but I'm proud that we have an MOU with AIMS Raipur has an MOU with IIT Bhilai. And I think very soon you'll see the difference when technologists and medical professionals will act using cutting edge technology, whether it is research, basic research, or translational research. I think we can really contribute. And like Venkatamanan sir has very rightly mentioned, we can really achieve great heights. I echo his sentiments that these institutions need to work together. And I remember our honorable secretaries in the past, Mr. Pradhan, for example, he was our secretary. When he came to know that IIT is coming up over here, IIT Bhilai, he mentioned that we should work as a team with IIT Bhilai or IIM Raipur and come up with dual degrees or courses or collaborative research so we can all progress together. So I think it's a step in the right direction. I'm seeing the energy of your faculty as well as of your students, whether they're the BTech, MTech, and PhD students in different streams. We have met them before, and I know that they've done very well. And there is a great deal of interest and passion towards the kind of work they do, whether it's in engineering or in science or even in liberal arts. We should work together. And I'm sure that you'll have a wonderful campus. Waiting to go to and see the new campus also. It will be a vibrant campus, which is environmentally friendly. And I'm sure that all of us, my team members here, would like to visit that campus once it is ready and would collaborate with your team. And a lot of groundbreaking research or even basic research is possible. I appreciate the hard work done by all the employees. And a lot of work is done which may never be recognized by somebody because it is done behind the screens, but the contribution is never forgotten. Anybody who has done, especially in the foundation period, will always be remembered. It becomes part of the ethics and work culture of the institute. I congratulate Professor Rajat. Right from the very beginning, he has been here as the founder director. And I know the challenges because even I have seen AIMS Raipur, and as a founder director, the kind of effort you have to put, whether it is, we used to be told about the CPR for AIMS Raipur, and I think the same is true for you. And it's not cardiopulmonary resuscitation, but it's construction, procurement, and recruitment. So these three things which we were told to do, and I'm sure that applies here also to both of us. We are happy to have these top level institutions in our city. And especially, I like to see the dynamism and energies of your students, faculty members. So my heartiest congratulations to all of you on your 7th Foundation Day. And the way he told about the importance of 7, it makes it very much more interesting. Thank you very much. And we are, of course, all of us going to celebrate the 75th Independence Day. So God bless you all. Thank you very much. And long live the association of IIT Bhilai, AIMS Raipur, and other institutions. We'll always work together as a team. Thank you very much. थैंक यू सर। स्मृति और विस्मृति हमारे चेतन और अवचेतन मन की दो अनुभूतियां हैं। सहज रूप से समझने का प्रयत्न किया जाए तो दोनों एक ही तुला के दो हिस्से हैं। विस्मृति शून्य नहीं है और न असत्य। विस्मृति चेतना का वह आईना है जिसमें दिखाई देने वाला चेहरा धूमिल दिखने लगता है। चेहरा दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन समय की परतों ने आईने की पारदर्शिता पर अपनी मलिन छाप छोड़ दी है। विस्मृति है, इसलिए स्मृति का अस्तित्व है। जितना हम विस्मृत करना चाहेंगे, स्मृति के पटल पर उतने ही दस्तक उद्वेलित होंगे। अतः मैं निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें ताकि हम उनके स्मृति पटल पर भविष्य में हमेशा दस्तक देते रहें।
धन्यवाद। अब कुछ मनोरंजन की ओर रुख किया जाए। संस्कृति का नष्ट होना संस्कार की समाप्ति है। संस्कार जहां समाप्त होते हैं, मदान्ध की सीमा का वहीं प्रारंभ है। मदान्ध एक व्यक्ति नहीं होता, एक जाति नहीं होती, एक समाज नहीं होता, कभी पूरा देश मदान्ध हो जाता है। देश व्यक्तियों का समुच्चय है, व्यक्ति मदान्ध होंगे तो देश भी मदान्ध होगा। इसलिए सुरक्षा संस्कृति की चाहिए। संस्कृति का ह्रास हुआ नहीं कि एक एक व्यक्ति और अंततः समूचा राष्ट्र ही समाप्त हो जाता है। समय सदैव पकड़ में नहीं आता, आज आया है तो उसे पकड़ते हैं। संपूर्ण आस्था और शक्ति से संस्कृति की रक्षा कीजिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत यदि नष्ट हो गई तो हम खोखले हो जाएंगे। हमारे भीतर संस्कृति नहीं रही तो हमारा जीना निरर्थक हो जाएगा। अपनी सांस्कृतिक विरासत की कुछ झलक दिखलाने के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो उठा रहे देश के युवा पीढ़ी के छात्रों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और श्री ऋषित अग्रवाल से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम के इस भाग के सूत्रधार होने का उत्तरदायित्व वे संभालें। और मंचासीन सभी आदरणीय से मेरा आग्रह है कि कृपया मंच के सामने से कार्यक्रम का आनंद लें। Thank you, sir. I would request COSA management to please have the setting for the culturals. तिरंगा हर घर, तिरंगा घर घर, तिरंगा हर घर, तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर
त्रिवर्णा इलमेंटो वन्नतोड़ी इरगडोरा त्रिवर्णा. Hello. Hello. Cultures. The role of culture. What do you think about culture? Culture reflects on our society. Well, it's a provoking thought. Wandel Pierce. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Rashid Agrawal. I'm a BTech student of second year from DSI branch, and I wish you a happy 7th Foundation Day. Culture resides in people's heart, and we, people here at IIT Bhilai, always aim at diversifying it. So, let's move with the culture performance of the afternoon. Indian classical music. We have Rag Bhairavi, which creates a rich, devotional atmosphere. So, let's add this aura to our performance and the occasion today. So, we have Shweta Chauhan and Ansh Azad Bhaiya from BTech's third year to have Rag Bhairavi. Over to you.
sa da sa re ga ga re sa da sa sa da sa ga pa da re ga pa da sa re ga pa da sa re ga sa re da sa pa da ga pa re ga sa re da sa re da sa pa da ga pa re ga sa re da sa re da sa pa da ga pa re ga sa re da सा सुख की डफली रोए हैं दुख की बंसी गाए सुख की डफली रोए हैं दुख की बंसी गाए भक्ति में इतनी शक्ति है द्वार स्वयं खुल जाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तीन शब्द में सृष्टि सारी समाई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Wow, that was such a scintillating performance, really. Well, I have one question. Could any one of you guess a dance form that has such a sophisticated set of hand movements, a gesture, well, vivid emotions? Okay, let me give you a hint. It's from Tamil Nadu. It's one of the 8 Indian classical dance forms. Well, to address it, it's the Bharatnatyam. Well, I would like to call upon stage Ekta Makhija from MSc second year and Mukta Tiwari from BTech second year. Well, here we have.
No, 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 no. For this enthralling performance, we need another round of applause. Thank you. So, now I'd like to invite Nukula Shreya, Ishita Saxena, Vikas Samota, Arnav Prakash, Dhruv Gupta, Aditi Mahajan, Ayushi Bharati, Vaishnavi Kahar, Riyanshi Goyal, and Shrija Lahiri, students from BTech 2nd and 3rd year for the group dance.
Thank you guys. You guys really hacked the beat. Damn. So, it's a tradition in our institute to end the cultures with a touch of traditional attribute. And with this, that's the end of the cultures. Thank you. And now the only thing left to say is Namaskar. Thank you everyone for cooperation. Now I will hand over to Barun sir. Thank you, Rashid. It was not the end of cultural, but the event. If you people are alive, culture will not end ever. तारीफ उसकी की जाती है जिसमें कोई कमी होती है. आपने गायन, वादन और नृत्य इन तीनों से मिलकर संगीत पूर्ण होता है और आपने तीनों विधाओं को यहाँ पर देखा. ईश्वर की कोई तारीफ नहीं करता, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कलाकार जब किसी भी कला का प्रदर्शन करता है तो साक्षात माँ सरस्वती उनके अंदर विराजमान होती हैं. तो मैं बस आपको नमन कर आपकी कला को ईश्वरीय रूप देना चाहता हूँ और मैं दर्शक वर्ग से आग्रह करूंगा कि मेरे कथन के समर्थन में एक जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई करें. संघर्ष जीवन का पर्याय है. जिस दिन संघर्ष समाप्त होगा, जीवन के अस्तगामी सूत्र का बोधक हो जाएगा. निरंतर प्रगतिशील बने रहने के लिए आश्वस्त होना श्रेष्ठ नहीं है. पानी से प्यास बुझती है, लेकिन वह अगली प्यास की तृप्ति नहीं हो सकती. प्यास लगना और पानी का स्वीकार निरंतरता का बोध है. तृप्ति जीवन की अंतिम संज्ञा है. अतृप्त व्यक्ति आगे और आगे बढ़ते रहने के संघर्ष से ही साधारण से असाधारण बन सकता है. प्रगतिगामी चेतना में अवरोधक कालखंड, चाहे वो कोरोना हो, अस्थायी परिसर की कठिनाइयां हो, वे कितनी भी विकृतियां उत्पन्न क्यों न करें, सहनशीलता को उत्तेजित करना चाहिए. सहनशीलता ही श्रम है और कोई भी श्रम कभी निरर्थक नहीं जाता. तो हम अतृप्त व्यक्ति बने, सहनशील बने, श्रमवान बने और साधारण से असाधारण बने. इसी संकल्प के साथ, इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव एवं आगे की घोषणा के लिए डॉक्टर सोनल झा को आमंत्रित करता हूं. मेरी सेवा यहीं समाप्त होती है. धन्यवाद. थैंक यू विपुल, इस कार्यक्रम के सूत्रधार बने रहने के लिए. Thanks also to the students who turned up with such an invigorating performance and led to a rousing end for our function today. I would like to begin by thanking our chief guest, Dr. Nagarkar, and his team who came today to join us on this very special occasion for our institute. Thanks also to Sri K. Venkat Ramanan, Chairman of our Board of Governors, for joining us all the way from London, taking out the time. My special gratitude, of course, to our director, Professor Moona, for his support to our team, and to Mrs. Rajni Moona for her constant guidance throughout this process. We are also thankful to Professor P.D. Srivastav and his team, which was involved in the evaluation and selection for the Best Employee Awards that we saw being distributed today. Of course, Wing Commander Dr. Jayesh Pai, our registrar, and his admin team was instrumental in holding this function today. They all helped us pull this program together. Of course, many staff members were instrumental to this, but I would like to make special mention of Kaveri, who helped me coordinate this program, and all the staff members, of course. Also Ratnadeep, who is the media cell staff member, who helped put together this in-press booklet that we saw being inaugurated today. Thank you, Ratnadeep, for that. The contribution of the hospitality staff and the security team has to be acknowledged. Without them, these programs cannot be held. Thank you all for turning up today, faculty members, staff members, all the students who are here. And with that, I'll conclude the vote of thanks. I would request everybody to please stand for the national anthem.
Okay, thank you. Thank you for that. I'd like you all to join us for refreshments. Faculty members and staff can move to room number 107. Students, your arrangements have been made in your respective mess halls, so please proceed there. Guests, please. Let me take this opportunity to thank our chairman BOG, who had been there for whole day, whole of morning of his time with us. Thank you very much. Your encouragement has been very, very. No, thank you. And thank you all and have a good day. Bye-bye. Sub.